चमकीले के बारे में भी बहुत पता है और चमकीले की जैसे लाइफ के बारे में भी बहुत। दूसरों की तारीफ कर सकता है बट खुद जब वेट पुट ऑन करना पड़ता है तो किसी भी एक्टर के लिए। फिल्में चल नहीं रही हैं, फाइनेंस नहीं है, कोई पैसे देने को तैयार नहीं है, फिल्में कैसे चलेंगी, क्या होगा। नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है आज तक में। मैं हूं अनीता ब्रिटो और आज मेरे साथ है द रिनाउंड एंड मोस्ट सक्सेसफुल डायरेक्टर इम्तियाज अली। हाय सर, वेलकम. Firstly, thank you for a brilliant experience on set. We had a blast, and this is actually my second or third time, and I'm amazed with what I saw today. So thank you for that. Thank you for coming all the way. Thank you for inviting us actually. Let me begin by asking you. पहले तो ऐसा है कि I'm very curious to know who is that one person who came to you with this script, जिन्होंने आपको ये स्टोरी के बारे में बताया, and plus what was the source of information for you to make this film, and what was that one point when you said कि हाँ चलो इस पे बना सकते हैं मूवी, because you are known to make love stories, you are known for a certain genre of films that you make. This is something, a new genre for you as well. So what was the entire... It's true, I've never made a biopic before and I never thought of making a biopic either. बट चमकीला के बारे में मुझे ख़बर मिलती थी अपने दोस्तों से, ख़ास करके राजेश शर्मा हमारे प्रोडक्शन हेड थे, इंचार्ज थे, और राजेश शर्मा हमेशा कहता था कि मुझे चमकीला की फिल्म बनानी चाहिए, और वो चमकीला के बारे में पहला शख्स वही था जिसने मुझे बताया था. फिर उसके बाद गाने सुने और बहुत सारी चीज़ें बहुत इंटरेस्टिंग लगी. फाइनली आज से करीब 5 साल हो गए शायद. Okay, it is even before Love Aajkal too? Yeah. Okay. Yeah, I think it's definitely before the release of that or around that time I feel. पता नहीं शायद पहले ही होगा. Okay. That a gentleman called Harpreet पंजाब का है, नाभा का है. So he had the rights of the film Chamkila. Okay. एंड जो कि बड़ा मुश्किल था प्रोक्योर करना, तो उसके पास वो राइट्स थी और फॉर सम रीजन ही फेल्ट दैट ही शुड अप्रोच मी टू डायरेक्ट दिस फिल्म. एंड सो ही केम अक्रॉस विद रजनीश हु इज a part of this film as well. And he offered to make this. मैंने पूछा कि यार मेरे पास क्यों, मैं तो पंजाब का भी नहीं हूँ. तो उसने कहा कि आपकी फिल्मों में पंजाब हमेशा बड़ा इंटरेस्ट है. I had that one question where you are brilliant in capturing Punjab. So the essence you can capture it really well. Lucky, but we'll get to that later. However, he came. Harpreet उस आदमी का नाम है. I feel who came in and he didn't even know what's going to happen. फिर 5 साल लग गए, क्योंकि पहले तो मैंने सोचा कि मेरे पास उतनी नॉलेज नहीं है, उतना मैं जानता नहीं हूँ चमकीले के बारे में, बताऊंगा क्या, खुद ही पता है. बट फिर कोविड हो गया. फिर कोविड में मैं पंजाब विजिट किया मैंने विद चमकीला इन द बैक ऑफ माई माइंड. और उसके बाद फिर जिन जगहों पे मैं गया, फिर धीरे धीरे वो इंटरेस्ट होने लगा और फिर वो मटीरियल को मैंने बार बार पढ़ा, फिर खुद से जांच पड़ताल की, लोगों से मिला, had my own view and my own story to tell in Chamkila, through Chamkila, and that's when I decided to make the film. So how much is it true to the story and how much is fiction? Have you taken any... as far as I know, it's completely authentic, it's completely true. मतलब मैंने कहीं पर भी वो जिसको कहते हैं कि शॉर्टकट नहीं लिया है कि मुझे नहीं पता तो मैंने फिक्शन का कोई ऐसा सीन अपनी इमेजिनेशन से लिख के डाल दिया. जैसे बहुत सारे ऐसे सीन्स हैं जो कमरों के अंदर होते हैं, या चमकीला अकेला होता है तो उसने किस तरह से बात की होगी, क्यों कहा होगा, उसके पीछे भी मैंने एनालिसिस की. कि ये हुआ होगा, फिर ये शायद बात हुई होगी, उसकी वजह से फिर उसका रिजल्ट ये हुआ जो फिर दुनिया को पता है. तो I have tried to be as authentic as possible for my own sake, because मुझे लगता है कि imagination पे based films तो मैं बनाता ही हूँ, तो ये मेरे लिए कैसे अलग होगी. करेक्ट. और दूसरी बात ये भी है कि जब आप मतलब सत्य की खोज में निकलते हैं, so to speak, as a filmmaker, तो सबसे ज़्यादा ड्रामेटिक चीज़ें आपको मिलती हैं. राइट. बट जब हम एक
बायोपिक बनाते हैं, हम कोई भी स्टोरी एक रियल लाइफ पर्सन के बारे में बनाते हैं जो थे यहाँ पर, देर आर ऑलवेज यू हैव टू बी वेरी केयरफुल ऑन हाउ यू पोर्ट्रे हिम, and also making sure that you don't hurt anyone's sentiments in the making. How have you managed to see, एक जिसके बारे में आप कहानी बना रहे हो उससे एक अटैचमेंट हो जाती है, राइट? तो ये तो मुझे यकीन था कि मैं कम से कम चमकीला को तो नहीं हर्ट करूँगा. But he had a following, and even now there are people who adore him. Yeah, of course, there are so many people that follow him. बहुत सारे पंजाबी म्यूजिशियंस जो आज बहुत पॉपुलर हैं, वो उस चमकीला को बहुत हाईली रिगार्ड करते हैं, लाइक दिलजीत. मतलब there was never any question in his mind that मतलब he was always very happy to make a film or be in a film on चमकीला. बहुत ये लोग फॉलो करते हैं. बहुत सारे पंजाबी सिंगर्स ने जो बहुत फेमस हैं, उन्होंने सब ने कहा है कि जी तो मतलब हम उसके गाने गाते हैं. बहुत लोगों ने ये भी कहा है कि हम जब भी अपने शोज ओपन करते थे तो पहला गाना चमकीला का गाते थे. Oh, lovely. तो विद इन द म्यूजिशियन कम्युनिटी ही हैज अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट. Correct. Because his compositions were very unique and his lyrics were the most unique. एंड जिस स्टाइल में वो गाते थे वो बहुत ऑथेंटिक होता था. मतलब कि बहुत ही रूरल पंजाब की भाषा और टोन था उसका. तो ही हैज़ मेनी फैंस अमंग द म्यूजिशियंस, एंड बहुत सारे ऐसे भी गाने हैं जो उनके ट्यून्स पर आते हैं जो फिल्मों में अक्सर आते हैं. तो इन दैट वे, yes, he was a powerhouse of music, and he was known as Elvis. Elvis Presley. He was called the Elvis of Punjab. And but he died at the age of 27 after having done all of that. Right. We spoke about Diljit. Apart from Diljit and Parinti being actors and good singers, was that one of the reason for casting them? Hugely the reason was that they are singers. I was clear for some reason that I wanted actors in this movie who would be singers. Chamkila had to be a singer. Yeah, of course. तो दिलजीत, आज अब मुझे लगता है कि अगर दिलजीत नहीं होता फिल्म में तो शायद फिल्म बनती ही नहीं. Because उसको समझ भी बहुत ज़्यादा है चमकीले की लाइफ की. बिकॉज उनको चमकीले के बारे में भी बहुत पता है, और चमकीले की जैसे लाइफ के बारे में भी बहुत पता है कि किस तरह से चीज़ें हुई होंगी या किस तरह से लोग बिहेव करते हैं पंजाब में, छोटे गांव में, एटसेट्रा. सो परिणीति का भी यही था कि मतलब बगैर सिंगर हुए मैं नहीं कास्ट कर सकता था किसी एक्टर को. फिर मैं लकी था कि परिणीति काफ़ी अमरजोत की तरह दिखती भी है. और मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि किसी भी मर्द या औरत के लिए आज की डेट में वेट पुट ऑन करना बहुत मुश्किल है, स्पेशली एक्टर्स के लिए खास करके. हालांकि उनका काम है, मतलब रोल्स के लिए लोग वेट पुट ऑन करते हैं, बट मतलब हर आदमी दूसरों की तारीफ कर सकता है, बट खुद जब वेट पुट ऑन करना पड़ता है तो किसी भी एक्टर के लिए बहुत मुश्किल होता है. परिणीति ने किया है इस फिल्म के लिए, बिकॉज मैंने उसको कहा था कि अमरजोत मुझे हीरोइन जैसी शेप नहीं चाहिए, वो नहीं हो सकता. तो और उसने बोला कि मैं करूँगी, और मुझे लगता था कि नहीं करेगी, बोल रही है कि करेगी, बट उसने वाकई किया है. वाकई उसने. So how much weight did she have? I don't remember in kilos, but her look changed for Amarjot. Even Diljit has a brilliant look in the film. With what I've seen. He's also turned himself. Even he lost weight or something like that, because he looked lean. He has lost weight, and he is going to lose. जैसे कि अभी ना हम लोग उसके कुछ यंग पोर्शंस करने वाले हैं, उसके लिए और भी वो वेट लूज करके करने वाला है. तो और हमारी जो टीम है ना वो भी बहुत अच्छी है, बहुत ही मतलब उम्मीद से ज़्यादा उसने अच्छे से काम किया है अबाउट ऑन द लुक ऑफ चमकीला एंड अमरजोत. वाह.
That's brilliant. Imtiaz, so if I come and then we talk about the current scenario that you can see in Bollywood, you don't know what works, what will not work. We bet on something that it will really work, and then it doesn't turn out. The audiences are not happy. Sure. As a writer and a director, how do you make sure that that you stay relevant with the times that we are in? And as a director, how does this change in the industry impact you? Or has it impacted yet? Or I think this change in the industry or in the way audience is viewing films, especially post or during COVID, has affected all filmmakers. Correct. And it has also affected me in that way. But I believe that जब इस तरह की उथल पुथल होती है ना, जब लोग कह रहे होते हैं कि यार पता नहीं क्या चलेगा या क्या नहीं चलेगा, वही दौर फिल्म मेकर्स के लिए सबसे अच्छा होता है. Really? मुझे याद है कि जब मैं फिल्म इंडस्ट्री में आया था और तो उस वक्त भी ऐसे ही लोग कह रहे थे कि यार फिल्में चल नहीं रही हैं, फाइनेंस नहीं है, कोई पैसे देने को तैयार नहीं है, फिल्में कैसे चलेंगी, क्या होगा. और उस वक्त somehow वही हमारे लिए अपॉर्चुनिटी थी टू कम इन एंड से दैट मुझे लगता है ये चलेगा. इसलिए नहीं क्योंकि हमें पता था कि वो चलेगा, बट इसलिए क्योंकि हमें वो फिल्म बनाने की इच्छा बहुत थी. करेक्ट. तो मुझे लगता है कि मी एज अ फिल्म मेकर आई एम नॉट अ ट्रेड पंडित. मैं ये बोल नहीं सकता कि कौन सी फिल्म चलेगी या नहीं चलेगी, ऑथेंटिकली नहीं बोल सकता हूँ. बट मैं ये ज़रूर जानता हूँ कि ये मुझे बनाने का बड़ा मन है. मुझे दिल कर रहा है कि मैं ये फिल्म बनाऊँ, और उसी वजह से मैं फिल्म बनाता हूँ. तो चमकीला में भी ऐसे ही है. जब मैं बाहर सोचता हूँ इसके बारे में तो मुझे लगता है कि हाँ, इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो बहुत ड्रामेटिक हैं और यंग है, और फिर स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है चमकीले की ज़िंदगी की, म्यूज़िक है, बहुत सारी चीज़ें हैं. मगर बेसिकली मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मेरा एकदम दिल कर रहा है. बट समवेयर डू यू हैव एनी फियर कि कैसे चलेगी नहीं चलेगी? वो है एज अ डायरेक्टर ऑलवेज एवरीवन इज इंटरेस्टेड इन टू सी हाउ इट डज एट द बॉक्स ऑफिस. मैं बिल्कुल चाहता हूँ कि मेरी हर फिल्म बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो, और सक्सेसफुल से ज़्यादा लोगों को बहुत पसंद आए. दे रियली एंजॉय द फिल्म्स. और मैं कोशिश करता हूँ कि उनको पसंद आए. इस बार भी कोशिश कर रहा हूँ कि लोगों को पसंद आए. एंड फियर से भी होता है मेरे ख्याल से, बट मुझे थोड़ा कम होता है. मुझे फिल्म बनाने की एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा होती है. Okay. मुझे लगता है कि जैसा कि मैंने कहा कि मैं ज़रूर अपना इंटेलिजेंस यूज़ करता हूँ कि फिल्म ये चलेगी ना, हाँ चलेगी शायद, चलो ठीक है. मगर मैं उस वजह से फिल्म नहीं बनाता हूँ. मैं इसलिए बनाता हूँ क्योंकि मेरी इच्छा है बनाने की. But how do you see your failures as a director? How, like, if you talk about your last Love Aajtak, how did you cope up with that, or how did you see where? I feel that, see, if I look at the filmography of any film director now, I feel that there have been highs and lows. Absolutely. So I feel that कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप कुछ करते हो वो नहीं चलता है ना, तो उसकी वजह से आप कुछ नया करते हैं, कुछ ज़्यादा अलग तरह से एफर्ट मारते हैं, कुछ नई चीज़ के बारे में सोचते हैं. तो मुझे लग रहा है कि एक अपहीवल हुआ है मेरे साथ भी, और मैं कुछ मतलब दूसरी चीज़ें सोच पाया हूँ. एंड एक बात जो मैं आपको बोलना चाहूँगा इस संदर्भ में वो ये है कि मैंने पर्सनली फिल्म इंडस्ट्री में आने के पहले भी बहुत सारी चीज़ें फेलियर से हासिल की हैं. बहुत सारी चीज़ें थी जो जिनमें मैं अगर फेल नहीं करता तो फिर मैं यहाँ होता ही नहीं. तो मुझे लगता है कि जब कोई चीज़ फेल कर जाती है ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें ज़रूर कोई बड़ी चीज़ छुपी हुई है, कोई इससे भी ज़्यादा बड़ी चीज़ या ज़्यादा अच्छा होने वाला है.
So since we're talking about failures, we also have to talk about all the success that you have received. We also have to talk about Jab We Met, which was recently re-released, and I think this year it's completing 16 years, if I'm not wrong. How do you see that people have just gone crazy when they saw movie jab release हुई थी, re-release हुई थी theater में? People have gone crazy, and even Shahid was asked कि do you think कि this has a scope for a sequel? I would like to know from the main master behind that film. Actually, let me first say that when the movie Jab We Met re-released in theaters recently and people really gave it a lot of love, मैं यहाँ पे पंजाब में शूट कर रहा था और मुझे खबर मिलती थी या वीडियोस मिलते थे या रात को people dancing in the theaters and all. तो people are dancing in theaters etc. और एक सेकंड जस्ट उस एक मिनट के लिए मुझे थोड़ी फीलिंग आती है कि यार काश मैं भी वहाँ होता. और अब तो 16 साल हो गए और ऑब्वियसली जब भी मेट मेरी फिल्म है और बहुत ज़्यादा मेरी फिल्म है बिकॉज of the association that I had before making that film. But अब ऐसा लगता है कि मेरी है नहीं. वो उन लोगों की फिल्म है वो सेलिब्रेट कर रहे हैं मगर उसमें अगर मैं भी होता थिएटर में तो कितना मजा आता है कि लोग नाच रहे हैं. I feel that I look at Jab We Met like an old friend rather than my own film now. Right. So are there chances that you can recreate the film, matlab either make a sequel or have a different story to it? I wouldn't want to make a sequel of Jab We Met. Okay. Because I don't know, I feel that it's complete in itself. It's in its own place. अभी तक तो मेरा कोई ऐसा ख्याल नहीं हुआ है कि मैं कभी उसका sequel बनाऊं. But if there is a possibility, who would you like? I'm just asking, who would you like to cast from today's generation if given a chance? Diljit and Pariniti. That's a very safe answer. No, it's just that I've been working with them, so that's what can come to my mind, I guess. Okay, I'll take that as an answer. But I also have this very because whenever I've seen your films, I've always seen the female characters have a very strong and strong roles, and they always stand out. I want to know, how do you develop these characters? Do you always plan कि ये character ऐसा ही होगा and you don't cheat in that or anything? No, I don't plan anything. I just start writing and it emerges like that. I feel that if the characters are etched in a certain way, it is coming from what I have seen in my life in some sort of a way. If women are coming in a certain way, that's also because of the same reason that I've, I guess, been very lucky to have had the company of women that have given that impression to me. I have known very intelligent women in my life, starting with my mother, I feel, who is like a nightmare of a mother to have because I could never get away with anything. Because she is so smart. She is literally perhaps the most intelligent person I know. So I guess people ask me that why is the woman more intelligent in all the movies? It's not as though she's more intelligent, but I guess she's more intelligent than what people expect the film heroine to be. Correct. So I have last two questions for you. That is one thing that you have learned during the course of shooting this film about yourself as a director on a personal level. I'm just asking. What is that one thing you have learned about yourself? I have a very, I have to control myself because I have very childish energy. Okay. And I've got to control myself because I feel that, I don't behave like a director. Okay. I feel that I sometimes just behave in a very childish manner, and people kind of protect me, I feel. I don't know how else to put it. I feel that I don't. I think it's important for a creative artist to have a childish energy,
but it's also for me always a challenge to balance it out. Right. You know. So did you manage in this film? I feel that the unit this time was very good, and they let me be. You know, a lot of things like today we were shooting and completely unplanned. There was a certain time when we suddenly decided to tilt the camera up, and there were girls standing, and they were not supposed to be in shot, but they were standing, and then we started to scream to them, dance karo, dance karo, dance karo. We started dancing over it, they started dancing. And then one thing led to the other, and there was a whole sequence that came out of it. Lovely. So I feel that, but I feel protected by people around me, so that I can be mature. Because sometimes you've got to go away from logic in order to come to something authentically artistic, you know, and creative and interesting. Right. हर चीज अगर लकीर से आप चलोगे ना तो कुछ भी interesting बनेगा नहीं सिनेमा में. तो sometimes I feel that I have to control my childish energy. That's a challenge. Okay. Finally, when we just started talking, I had a complaint that, you know, you should start doing more films and don't take a break. So is that what we will let the audience also hear from your mouth, that yes, you will be doing back-to-back films and not take a break? Yes. And audience, because of COVID, I've had so much time to write so many films that now I have many scripts that are ready, and one after the other I'm going to make films, not for you but for myself, because I feel I'm a director, and a director needs to be on a set and direct. Yes, absolutely. So I hope that my films roll out faster and faster. And he's also going to announce his next film on Aajtak today. Yes? What is my next film? That's what I'm waiting for you to announce it. So, because this year, any which way is coming next year. Aajtak, I announce my next film. I announce my next film on your channel. नाम तो बता दो, जॉनर बता दो, थोड़ा एक हिंट दे दो प्लीज. मुझे नाम जॉनर प्रॉमिस मैं नेक्स्ट ईयर से पहले चमकीला से पहले नहीं रिलीज करूंगी. मुझे खुद भी नहीं पता है, सीरियसली नहीं पता. मेरे जो मैंने बोला था आपको कि मैं अपनी नेक्स्ट फिल्म मेरी पे काम कर रहा हूँ, एक्चुअली वो एक नहीं होती, वो कई सारी होती हैं. तो वो सब अलग अलग जॉनर की हैं, उस नाम किसी का भी नहीं है, मगर मैंने अनाउंस कर दिया मेरी नेक्स्ट फिल्म. All right. Well, on that note, thank you so much. Thank you. And it was pleasant to be here. It was our day. Well, actually, you made our day. But thank you so much. We are really looking forward to Chamkila. After what I've seen today, really interested. And yes, I will tell you one thing. When there was the dance sequence, I really wanted to enter and start dancing there. But yes, I have controlled myself. But I'm really looking forward to the film. You controlled your childish energy. Yes, I did. Thank you so much. It was lovely talking to you.